na na re. Hum tum da da na na da na 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 re. Hum tum da 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 na 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 da na 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 re. Ya la li ya la la ya li ya la la ya la ya la ya la ya la ya la. I'm here today once again at SEPMA 2020. Today I'm very excited to be presenting the award for Best Pop Music Artist. Again, I'm very proud to be associated with Shan Pakistan. Have always been a fan. They are one of the few organizations who are proud Pakistanis who promote new talent, upcoming talent. And we've been associated with them in the past, and I'm glad to be here today and very excited to be presenting this award. Thank you. तो अस्सलाम वालेकुम. अब जैसे आपने देखा कि एक्साइटमेंट कितनी है उमर जी को अवार्ड देने के लिए, इस तरह मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है जब उमर मेरे साथ खड़े हो जाते हैं. देखिए ये वो सपोर्ट सिस्टम है जो एक पाकिस्तानी को देता है. एंड उमर हमारी ख़ुद एक इतना ज़बरदस्त नाम है कि इनके नाम को किसी भी ज़रूरत नहीं है कि हम बयान करें वो क्या करते हैं. वो ख़ुद पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं. सो मैं सिर्फ अपनी एक कन्वेंशन के लिए उमर जी को बोलूँगी कि उमर जी आपको कैसा फ़ील हो रहा है शान पाकिस्तान के साथ जुड़ने में. और मुझे उम्मीद है कि आज आप हमें प्रॉमिस करेंगे कि आप हर दफ़ा हमारे साथ एक मल्टीप्लाई होकर खड़े हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम इमरान खान के साथ खड़े होंगे. क्या कहते हैं इस बारे में? I hope so, for sure. We definitely would like to be associated with Shan Pakistan. We've always been a fan and a supporter of Shan Pakistan. Right. I think since 2 or 3 years ago when our first meeting happened at the office, we knew that this was the Shan Pakistan were similar-minded people. Yes. And whatever support we can possibly give to you, we're always going to be here for you. Thank always. you so much. Thank you very much, Ji. Thank you. Hi guys, this is Ali Tariq, and I'm really happy. I'm really excited to be here at SEPMA 2020 Awards. मेरा गाना नॉमिनेट हुआ था, मुझे पहला अवार्ड मिला है मेरी ज़िंदगी का एक राज की बात पे. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा अपना कंपोज हुआ गाना, मेरा अपना लिखा हुआ गाना, उसके ऊपर मुझे अवार्ड मिला है. और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है SEPMA का कि मेरे जैसे म्यूजिशियंस और मेरे जैसे आर्टिस्ट और आगे आ सकते हैं इस तरह, और उनको अप्रिसिएशन मिलती है जो कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए. थैंक यू सो मच. The nominees for Best Music category: Pop Music, Abdullah Qureshi for Aja, Ali Tariq for Ek Raaz Ki Baat, Sahir Ali Bagga for Ishq Hoya, Zau Ali for Kuch Ishq Tha. I'm honored to be here today to present the award for the Best Pop Music to Ali Tariq, who's won this award. Just like to say a few words that I was present at the time of Ali's upcoming performances, one of the few performances that I had the pleasure of attending. Fantastic crowd pleaser, an amazing performer, and I'm very happy that this award for the best music is going to him today. I'd also like to thank Shan Pakistan for inviting me here as one of the presenters and for being part of this, for inviting me to be a part of this fantastic initiative. Shan Pakistan has always been on the forefront of promoting Pakistan in general, and today they are promoting young talent and musicians. So once again, Ali, a big congratulations for winning this award. Thank you so much, Omar bhai. No, Thank no, you so thank much. I'd like to thank SEPMA and Shan Pakistan. मेरा पहला अवार्ड है ज़िंदगी का, तो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली हैप्पी. एंड ये अवार्ड जो है मेरे अलावा उन सब लोगों का है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की, मुझे सपोर्ट की. माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय मैनेजमेंट टीम, एवरीवन. ये आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा शान पाकिस्तान में और मुझे कोई अवार्ड मिलेगा, और इतने ज़बरदस्त लोगों के साथ यार. अली तारिक को देखे, स्केचेस को देखे, गम्बी यार मेरे तो पर्सनल हीरोज़ हैं इनमें से कुछ. तो थैंक यू सो मच शान पाकिस्तान, SEPMA फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड. इट रियली मीन्स अ लॉट. और मेरी कैटेगरी में भी इतने ज़बरदस्त लोग नॉमिनेटेड, कभी सोचा नहीं था कि मैं जीतूँगा, बस जीत गए. अच्छा लग रहा है. थैंक यू. Assalamu alaikum, my name is Fahad Nasser. I'm here to give the Best Achievement Awards in the category of Hip Hop to Muro. This time we have taken a COVID turn, we're going digital.
with SEPMA 2020, Shan Pakistan's fifth year in the running, and hopefully to a better future. Congratulations once again to all the winners, to Muro, Ali Tariq, and to many more. The nominees for the Best Music category: Hip Hop Music, Muru for Sach Sabak, Faris Shafi for Nazar, Sami Amiri for Back Off, Ever B for Mortifier. Assalamu alaikum. My name is Fahad Nasser. I'm one of the co-founders for Shan Pakistan, SEPMA 2020. I'm very pleasured to be sitting here today presenting the achievement for this year's juried awards. It's been a 5-year journey. We're touching 5 years today on this very day. And I'm here to present the best hip-hop music and achievements for Muro. Congratulations. Thank you so much. Appreciate It's it. a juried award. It's a pleasure to be handing out to you with this new format, the Corona version of SEPMA. And hopefully many more editions. Thank you. Inshallah. Congratulations once again. थैंक यू यार मैंने अपने ख्वाबों में देखा था कि मेरे पास जब अवार्ड होगा, अभी तक मैं कोई अवार्ड नहीं जीता, आप लोगों को शायद पता ना हो, कि मैं बता देता हूँ कि मैं कभी पहले अवार्ड नहीं जीता कोई। तो मैंने अपने दिमाग में ख्वाबों में काफ़ी स्पीचेस तैयार की थी, लेकिन इस वक्त कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। बस ये पता है कि जूरी जिनने वोट किया है मेरे इस गाने के लिए जीतने के लिए, वो बड़े अजीम लोग हैं, तो उनकी वजह से एक और भी एजाज़ महसूस हो रहा है अवार्ड मिलते हुए, और इनकरेजमेंट महसूस हो रही है। तो इंशाल्लाह और भी अब हिप हॉप गाने बनाएंगे। ये मेरे ख्याल से दूसरा हिप हॉप गाना था, तो मुझे लगता है कि ये एक रास्ता है जिसके ऊपर अब मैं शायद चल सकता हूँ। थैंक यू सेपमा फॉर प्रमोटिंग दिस विद इन मी। यार हिप हॉप का मैंने ज़िंदगी में दूसरा गाना लिखा है और हिट हो गया है, अवार्ड मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट तो अब आतिफ असलम, आई एम कमिंग फॉर यू। I'd just like to thank Shan Pakistan, SEPMA, for even considering me to be a part of this award ceremony, and the jury, and also the fellow musicians who were also nominated in this category. Again, I'm really honored, and I'm really humbled that I've been given this opportunity to be a part of this. So thank you so much. The nominees for Best Music category: Individual Musicians, Gumby, Drummer, Umran Shafiq, Lead Guitarist, Gul Muhammad, Sarangi Player, Kami Paul, Drummer. अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम रियली एक्साइटेड, और मैं ख़ास करके इस अवार्ड के लिए आज बैठी हूँ। हालांकि मुझे बहुत ऑनर किया है मेरे दूसरे प्रेजेंटर्स ने ये अवार्ड देने के लिए, बट ये मेरा फेवरेट अवार्ड है। लास्ट ईयर हम इस तरह की कैटेगरी को नहीं जस्टिस कर पाए, क्योंकि डेफिनेटली हर दफ़ा एक कैटेगरी हमें फ़िल्टर करनी पड़ती है, फिर हमारे ज्यूरी के डिसीजंस होते हैं, एडवाइजरी बैठती है। इस दफ़ा वी मेड श्योर कि दिस कैटेगरी शुड नॉट बी मिस्ड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अदर दैन लुइस जे पिंटो, गम्बी। इनको किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज़ बीन द बैकबोन. I, as a CEO of founder of my own Shan Pakistan, I have no words for these kind of musicians who have taken their ages in the long journey and the processes. And as a best individual musician, I'm so overwhelmed to present this award to Gumby. And this awards has its own efficacy. ये उनके लिए है जो वाकई इस चीज़ के capable हैं, मतलब इसका कोई नेमल बदल नहीं है. So congratulations, Gumby, this is for you. Thank you And so I'm much. So It's such much an honor. happy, and I'm so much honored to present you this award myself. Thank you so much. And I would Thank love to have you again and again for each and every aspect of That's music, amazing. inshallah. That's a beautiful award right there. That's Thank great. you. That's great. Thank you so much. Thank you My so pleasure. So much. And you know, I'd really like to to sort of from the bottom of my heart is because I think जो musicians की जो importance होती है जी. वो for some reason is not seen as important as maybe the main artist, right? जी. Or people like yourself and your organization, Shan Pakistan, is making that impact for the musicians also. Right. Thank you. और मैं समझता हूँ कि because मेरी जो एक जर्नी रही है, I started out playing in a hotel lobby. Right. मैं लॉबी में बजाता था. Wow. And
काफ़ी नाइटमेयर था वो. It was crazy because लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए आते थे and you know for you to control your volume as a musician like as a drummer वो बड़ा मुश्किल होता था. तो एक बड़ी I wouldn't say I guess वो struggle is a part of it. जी जी बिल्कुल. लेकिन That made you what you are. Exactly. And coming from there to where I am right now and you know touchwood it's been about almost 4 years that I've been working with Rahat Fateh Ali. Mashallah. And it requires a certain skill set. It requires a certain frame of mind to be playing with a musician like him. बेशक बेशक. I mean, hands down, he's fantastic. But the first and only time that I experienced a certain level of respect on and off stage from him जी. was incredible. And then you know for something like this to be to be getting something like this, so it's really an honor, and I feel great that you know you are adding a category like this in an award ceremony like this for musicians. वाह. सो आप क्या समझेंगे गंभी कि ये कैटेगरी होनी चाहिए थी ना, इतने अरसे में मिस हुई है, और ये आप जैसे लोग तो बैकबोन्स हैं, वरना तो गाना सिर्फ लिरिक्स तो नहीं है, सिर्फ गाना तो नहीं है, उसके बजाय मतलब आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके बजाय तो गाना भी नहीं बन सकता. बेसिकली एक there are two sides of the equation. अगर सिंगर नहीं है तो हमारा कोई मतलब हम इंस्ट्रूमेंटल कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया, इन सारी जगहों में इंस्ट्रूमेंटल सुनने का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. Although I'm a huge fan of instrumental music, but when it comes to doing songs or it comes to playing with a band or playing with an artist, an individual artist, 50% musicians होता है, 50% artist होता है. Right. So it's a bond. It's a bond. And और एक वो जिस तरह कहते हैं ना मियाँ बीवी एक होती है, अगर इनके बीच में थोड़ा सा भी कुछ issue होता है, it never works. Right. So there has to be a certain synergy, and every project, whether it was the Coca-Cola project I did with Ruhail, or whether it was the Uphone project I did with my team, or whether it was with Khan Saab, or whether it was with Mikal Hassan, there was a certain synergy that I feel was very important, and it just brings out this, वो जिस तरह खान साहब कहते हैं आमद होने वाली चीज़ होती है. It's just the right mood. It's the right atmosphere, it's the right choice of notes that the musicians play with you, and you just feel like, you know, you're invincible at that time, basically. Wow. So, मैं एक चीज़ बड़ी इनसे बात थोड़ी देर पहले हो रही थी, and I was just thinking, you said आमद होती है. जी. तो एक म्यूजिशियन जो सिंगर है वो गाता है, जी. और डेफिनेटली यू प्ले योर बेस्ट सिग्नेचर बिल्कुल म्यूजिक इन इट. बिल्कुल. तो वो भी आपको लगता है कि वो आपके लिए भी एक आमद का वो है, बिल्कुल, या आप उसको उस सिनर्जी को उनसे ट्रांसफर करते हैं, या यू मेक योर ओन मोमेंटम एंड यू ब्रिंग योर ओन सिनर्जीज टू बी मैच्ड. आप थोड़ा मुझे हल्का सा बताएं, बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई माई सेल्फ आई एम नॉट अ म्यूजिशियन. मैं हमेशा कहती हूँ मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म जरूर, बट मुझे उसके बारे में सुनने में समझने में बड़ा मजा आता है. And it's very important to know who you are, what's your genre, what have you been, what synergize you, what is your positivity. More important, what's my job? What's your job? मेरा काम क्या है बैंड? Exactly. Basically, apart drums, एक तो होता है drums बजाना, और जिस तरह just to explain what you just asked, कि दो किस्म के लोग होते हैं, दो किस्म के musicians होते हैं. एक होता है जो हर शो पे या हर दिन हर रात जो भी शो बजाता है, एक स्पॉटलेस, एक अमेजिंग सोलो या एक ग्रूव या कोई वोकल चीज़ हर रोज़ एग्जैक्टली वही गाएगा, एग्जैक्टली स्पॉटलेस. Right. And then there's another set of musician who's going to play a new show every time he or she plays. Whether you're playing every day or whether you're playing once a month or you're playing once a year. I fall in the latter. Oh, okay. ठीक है. जो मेरी feeling होती है stage पे is triggered off by the events of the day. कि मेरे साथ क्या हुआ रोड पे, कोई बंदे ने मुझे काट के वो गलत उसने काट दिया, इंटरसेक्शन पे काट दिया, या किसी ने गंदी नज़र कराई है, या somebody said something that upset me, or someone did something that made me feel very emotional. And last but not the least, it's the topic of the song. Wow. जो गाने की जो topic होती है, you got to feel that. Okay. अगर लिरिकल कंटेंट है उसमें, मैं हमेशा, अगर मेरी पंजाबी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मेरी आई प्लेड पश्तो सॉन्ग्स, आई प्लेड सराइकी सॉन्ग्स, सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लेकिन मैं हमेशा एज अ रूल मैं पूछता ये गाना किस चीज़ के बारे में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि
जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ उस गाने के बारे में, whatever the topic is, it's an expression. ठीक है, it's an expression that will come out in my playing, and I think that is what translates to your audience. Very nice. अगर कोई love song है तो मैं कोई aggressive चीज़ नहीं बजा सकता उसमें. Okay, basically. Obviously, because Right? वो तो jelly नहीं होगा ना. Exactly. अगर कोई बगावत का गाना हो तो फिर उसमें आप तो romance नहीं कर उसमें सकते. exactly. So, you know, so it's Yeah, it has to go with the topic. exactly. So Yeah. there are two kinds of musicians out there. Ek who will be spot on, like will play exactly like Right. crazy slick playing. Right. And then there are musicians वो कहते हैं जी आप कोई चीज़ फेंके और मैं पकड़ लूँगा भाई. वाह. और खान साहब के साथ, and the reason why I keep talking about Khan Sahab is because not just he's a great human being and is a really funny guy. Right. हमारे हंसाते रहते हैं on and off stage, but जब वो अपने element में होते stage पे, वो शायद audience को समझ में आया ना आए, हाँ. लेकिन हम अपना मज़ा करते हैं. वाह. Whether there are 20 people in front or 20,000 people in front, it really doesn't मतलब matter. आप enjoy करते हैं. उस चीज़ को. Exactly. और वो यही कहते हैं गंभी भाई, there are times के क्योंकि वो आगे बैठते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में बैठता हूँ, तो it's not that I can see him or he can see me all the time. But you can feel that. You can आप feel foreign it people, right वो there synergy आपको मिल रही and then. होती है. Right there and then. And I think that is the success to me, that Wow. I'm able to penetrate through my audience Yeah. and through the person who is hiring me or to the band that I belong Yeah. to, that when I'm playing with them, they feel comfortable. It's Yeah. not about कि हर तरफ तैयारी दिखानी होती है. Yeah. वो हाँ. वो एक कहते हैं ना वजहतारी होता है, तो आपको बिल्कुल. अचानक ही कुछ होता है कि कोई कुछ नई चीज़ म्यूजिशियन बन होते जाए. हैं कि जी ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ. लेकिन ऑडियंस को वो देखता ही नहीं है. हाँ. क्योंकि वो फील नहीं कर पाता फील है. नहीं कर पाता. वो फील नहीं कर पाता है. ऑडियंस को नहीं पता कि मैं कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ या सिंपल कर रहा हूँ. Whatever translate to them is what they feel. Wow. And if they don't feel something, then you are doing something wrong. Audience का कसूर नहीं कसूर है. नहीं है. Exactly. So you defined it so well. I will have this longer chat with Gambi because Gambi हमें बार-बार नहीं मिलेंगे. इस वजह से ऐसी कोई because बात नहीं. नहीं, क्योंकि इस तरह के लोग, क्योंकि एक तो क्रिएटिव एंगल बहुत रखते हैं, मैं ये समझती हूँ, और दूसरा ये कि मुझे ये पता है कि you are such a person जो बैक कैमरे में अपनी ही ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के एक अच्छी चीज़ बनाते हैं. जैसे आपने कहा वजद तारी होता है, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि कोई चीज़ म्यूजिशियन को भी आपकी एनर्जी कितनी मिलती होगी और कोई चीज़ वो बना लेता होगा. आप कुछ ऐसा बजा लेते होंगे कि वो कुछ अच्छा गा लेता होगा, क्योंकि ये अल्फाज तो ऐसे ही निकल जाते हैं ना, वो कंफर्ट लेवल. Comfort level चाहिए होता So I है. think music has that chemistry to have along. I was just here to present the award, but I will definitely make a mark to sit with this gentleman, talk more about music, a little bit more. Why? Because it's important. What we are not just justicing this platform as giving just awards, it's just how these people have escalated the Shan of Pakistan, and they are actually the Shan of Pakistan. We are just an organizers. They are the people who have made musicians, made singers. इनकी वजह से राहत फ़तेह अली खान का नाम इन्होंने खुद इतनी दफ़ा लिया कि मुझे यही हो रहा है कि कितनी ज़बरदस्त बात है कि उनको इनके साथ मौका मिला और इनको उनके साथ मौका मिला, बल्कि राज is lucky to have people like him, and they create such a miracles and such a masti on the stage. So I think it's fantastic, Gambi, and I think we should keep connecting with you. And as you said before, in Shan-e-Pakistan, we are not just giving awards, we are trying to make this musicians, क्योंकि आप देखते हैं यूजुअली गम्बी क्या होता है कि एक एक्टर अपनी शक्ल से पहचाना जाता है जी. उसको ना भी बोलना है तो वो अपनी शक्ल से एक सेलिब्रिटी बन जाता है. जी. तो हमारे म्यूजिशियन भी तो सेलिब्रिटी हैं, आप सेलिब्रिटी हैं जी. आपकी फेस वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि लोगों को लगे ओ ये गम्बी साहब जा रहे हैं, मतलब ये हमारे मुल्क का अलमिया है. अच्छा, फॉर मी मेरी जो एक ट्रांजिशन फेज थी फ्रॉम, वो कहते हैं यू आर अ नोबडी, राइट, यू आर नोबडी, एंड व्हाई वुड एनीवन इवन केयर कि हु आर यू एंड व्हाट यू डू. इट डजंट, एंड दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड. दैट्स, वो दुनियादारी ऐसी ही चलती है भाई. तो मेरी मेरा जो एम था while I was growing up, I never thought I'd get to a point where I'd be sitting here and accepting an award from you and be on television, right? मतलब मुझे तो दूर तक अंदाज़ा नहीं था. आपको बुला लिया ना ज़बरदस्ती. Exactly. So the thing is that when I was growing up, मेरा जो aim था was to just play music. Yeah. And that's all I ever did in my life. मैं स्कूल में complete नालायक,
बच्चा था. I was very bad at academics. Right. Very bad at academics. So anything and everything that I learned, whether it was table manners or whether it was how to speak in public or how to interact with people, जी. I learned it on the road. Right. While traveling, I started traveling at a very early age, and I just kept traveling. I think the last 10 years for me has been more out of the country than I've been in the country. And met different kinds of people, met different kind of musicians. I learned so much from just being a musician, not just music. Right. And I was very lucky, touch wood, to find great people who put me on the right path. Right. But you chose your direction as well. Yeah? I chose my direction at a very early age, and I think that would be in my favor to some extent. Right. कि I grasped, मैंने absorb काफ़ी जी, चीज़ें जी, की over the जी. years. मिकाल के साथ जब मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी. आमिर ज़की के साथ बजाया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी. Then I was touring with the Vital Signs back in 1991. We did a couple of shows together. It's a legendary journey. Huh? Exactly, and then with Ruhail, it was those Must be fantastic. 4 years with Coke Studio it just, you know, opened up different avenues for me. I went on to putting up a recording facility. Right. So over the years, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई, लेकिन वो पूरी जो जर्नी थी ना, बड़ा इंस्पायर किया मुझे कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें भी करूं. Right. It wasn't enough for me कि मैं जाके ड्रम्स बजाऊं स्टेज पे. I wanted to feel connected to everybody in the band, and for my thirst to understand कि microphones kis tarah, what's the whole process of recording, and you know what kind of preamps are using and stuff like that. I was always very mesmerized by what Ruhail was doing. I was always mesmerized by what Amir Zaki was playing. Yeah. You know, all of these little things. And मेरी actually dream होती थी ये कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूं या ऐसे लोगों के साथ बजाऊं. And for me, it was important to earn that skill in order for me to be playing with those musicians. So आपको ऐसा होता है, गंभी, sorry to interfere you, आप अपनी इतनी खजाना जो है दूसरों को बांटें या सिखाएं, या आप सिखाते हैं बिल्कुल लोगों को, आप ट्रेन करते हैं? बिल्कुल. Amazing. मैं कभी मना नहीं करता अगर कोई मुझसे कोई चीज़ पूछता है. आप कभी आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो अगर आपको कोई स्टूडेंट ढूंढे, वो तो बेचारा मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ही कुछ काबिल हो सकेगा, एक साल तक आपको ढूंढता रहेगा. उसका एक रीज़न है कि पिछले 4 साल में मैं तकरीबन पर ईयर 150 से पौने 200 फ्लाइटें ले चुका हूँ. Wow, you've traveled so much. That's the amount I travel. तो जब कोई काम नहीं होता ना, तो मैं कोशिश यही करता हूँ, I spend time with my mother and my dogs. Wow. That's my whole universe right there. कोई किसी ने मुझसे कोई सवाल किया कि आप पिछले 7 महीने में क्या कर रहे थे, आप बोर नहीं हुए और घर से बाहर ही नहीं निकले, तो मैंने बोला यार ये तो I look forward to something like this, and you got maybe a chance to, you know, relax. Unfortunately कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा हुआ है, लेकिन for me, I think most of लोगों के लिए अच्छा हुआ है. I have everything I need in my studio and everything I need for my emotional well-being, you know, my dogs and my mother, and that's more important for me than anything else. और वही बात है, again कोई आमद होती है चीज़, go down, fire up the studio, उधर ही record कर दिया. Amazing, it's fantastic. So I think we have justice this part where we have tried to give you the award, and I have got chance to sit with you, and everybody's looking, and I think they will. You're an inspiration for a lot of people. Alhamdulillah. So, bas Gambi, last and finally, what you think about SEPMA? What would you say something good about SEPMA? SEPMA is it's not about my platform because it's an organization where we try to justice music. हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ जूरी, इतनी जूरी है और इतने लोग हैं ऐसे जो मेस्ट्रोज हैं जो वाकई इस चीज़ को फिल्टर करके आप जैसे लोगों को अवार्ड देते हैं. लाइक मेरा डिसीजन नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो एंड तक भी नहीं पता था कि कौन है, एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड कि वाओ, ही इज़ वेल डिजर्विंग. Thank you so much. We would have some quote from you, and then definitely that's the end phase of SEPMA itself. No, I really appreciate the jury and Shan Pakistan. I think that's such a fantastic name, Shan Pakistan. It feels grand. There's this certain you know, weight to it, and I'm really honored and humbled that, you know, I've been chosen this award. Wow. Especially over the musicians who were in the category also, and I think Kami Paul, Umran and me have worked a lot together in the past, a lot, and I don't think
me getting this award should be taking away anything from, because I Anybody. think Kami Paul is a fantastic drummer. That's your kindness. Yeah, he's a fantastic drummer, Right. and I mean the stuff he's playing and the stuff he's did with Coke Studio, it's really fantastic. And last but not the least, Gul Mohammed, he is वो sarangi बजाते हैं ना, मैं कहता रुलाएगा क्या मुझे, you know, he's so much emotion in his Beautiful. playing because and stuff you like yourself that. is such a beautiful Yeah. person from heart, Thanks. and I think everybody must be thinking that it's a joint venture. Yeah. I think this award has been dedicated to everybody who has been nominated. Exactly, I guess, I think. exactly. So that's the best part we can Yeah, see. and that's what I like to say. You know, this Yeah. award is on behalf of all those All those people, people. all those people out there. I think Ji. it's I should be sharing this with everybody Wow, else. wonderful, fantastic. Assalamu alaikum. My name is Fahad Nasser. I'm one of the co-founders for Shan Pakistan. It has been a pleasure to be sitting here in our studios today when the presentation for Karachi Achievement Winners is happening. The journey of this 5 years has been conceptualized by Huma Nasser. It's her vision, and we are just a few people who are working towards it, not to be. With this edition, it has been a bit different. With the new pandemic, we have taken a turn, and we've conceptualized the show in a digital format, and it has been a humble support given by musicians, nominees, winners, juries, crew members. Thank you for being part of this edition, and we hope you're there in future with us, standing in whatsoever way, in whatsoever situations to make Pakistan proud. Thank you. Stay tuned on our digital pages as well as Geo Network. And thank you again. Assalamu alaikum. So finally, we have covered the pandemic COVID edition of SEPMA 2020. बहुत आसान है ये 4 अल्फाज बोलना, but it has been a very very tough journey because एक तो पेंडेमिक ने सबको रोक के दिमागों को बिल्कुल फ्यूज़ कर दिया, और मुझे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते करते, अपनी टीम के साथ एडमिनिस्टर करते करते मुझे लगता है कि आई हैव गिवन विद माई टीम 24/7. Nothing comes very easy, but डेफिनेटली शान पाकिस्तान है तो हमें जस्टिस भी करना है. लास्ट ईयर से लेकर इस ईयर तक हमने ये जितना भी तवील अरसा हमने क्रॉस किया, उसका जो पूरी सपोर्ट सिस्टम और पूरी जो एक ज़िम्मेदारी से हमने उसको निभाया. मगर ख़ाली उसमें सिर्फ मेरा कमाल नहीं है, उसमें खुदा के बाद जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया, उसमें चाहे मेरी टीम हो जाए, चाहे मेरे लोग हो जाएं, चाहे वो विनर्स हो जाएं, चाहे वो नॉमिनीज़ हो जाएं, उसमें हर किसी ने अपना एक तावन रखा, क्योंकि दिस होल प्रोसेस इज़ नॉट जस्ट कैरीड बाय मी, आई एम जस्ट अ प्लेटफॉर्म. मगर उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें हमारे ज्यूरी ख़ास करके हैं, जो इतना ज़बरदस्त काम करते हैं, जिससे हमें ये उम्मीद होती है कि वो जस्टिस करेंगे म्यूज़िक को, पाकिस्तान के म्यूज़िशियंस को. और जो अवार्ड दिए जा रहे हैं वो एक शान पाकिस्तान अवार्ड हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अनफिल्टर्ड हो. हमने कोशिश पूरी की कि पूरे इस 16 अवार्ड्स को जस्टिस करें, एंड ब्रिंगिंग द बिग मेस्ट्रोज, जिसमें बड़े नाम हमारे मुल्क के, हमारे इंडस्ट्री के जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उसके साथ वो नाम जिनको जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, और शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो यहाँ तक पहुँचेंगे, बट उन्होंने अपनी काबिलियत की वजह से वो यहाँ पहुँचे हैं. हमारा इसमें सिर्फ एक ज़रिया है, हम उसमें सिर्फ ज़रिया बने हैं, और हम उनको निकाल के लेकर आए हैं, और उन्होंने जस्टिस किया है. सो बड़े नामों के साथ, जिसमें हमारे साथ आतिफ़ असलम साहब, जुल्फ़ी, मीशा शफ़ी, हदीका कयानी, जिन्होंने अपना एक टाइम निकाला है. और म्यूज़िक कभी भी बड़े और छोटे से मुतशाबहत नहीं होती, वो हमेशा एक काम से होती है, एक जज्बे से होती है, एक पैशन से होती है. एंड व्हाट म्यूज़िक दे क्रिएट, एन ओरिजिनल ट्रैक इज़ एक्चुअली सफाइज एंड जस्टिस थ्रू शान पाकिस्तान. इसी तरह हमने द नुसरत फ़तेह अली ख़ान अवार्ड आबदा परवीन जी को मिला है, एंड वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है. और लास्ट टाइम टीना सानी जी को ये अवार्ड मिला गया था, और आबदा जी ने हमें बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमें भेजा कि उनको बड़ी खुशी हुई है इस अवार्ड की, और ये एक इंशाल्लाह एक नेशनल अवार्ड्स के हवाले से हम इसको लेके जाना चाहेंगे. मैं सिर्फ ये बात करूँगी कि हर साल हम आते हैं, मुश्किलात होती हैं, वी डू ऑन आवर ओन मसल्स. शान पाकिस्तान इज़ अ प्राइवेट एंटिटी, मगर क्यों ना इसको एक कोशिश करके इसको एक नेशनल, जिस तरह एक नेशनल लीग होती है, जिस तरह एक नेशनल ग्राउंड होता है, स्पोर्ट्स जैसे एक नेशनल गेम है, क्यों ना हमारा म्यूज़िक भी एक नेशनल
लेवल पे जाके इसको हम जस्टिस करें हमारे ही मुल्क में। हमें दूसरी जगह जाके मनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह लोगों को वहाँ से यहाँ बुलाएंगे और यहाँ पर सेम स्टेज दिया जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, आई रिक्वेस्ट द कल्चर टूरिज़म मिनिस्ट्री कि मेरा ये आवाज़ मुझे नहीं पता कहाँ तक पहुँचेगी, बट मुझे उम्मीद है कि जिस चैनल पे ये प्रोडक्ट चल रहा है एंड जियो जिसने हमें पूरे सफ़र में इतना साथ दिया है, हमारी ये आवाज़ ज़रूर पहुँचाएगा कि सिर्फ इस म्यूज़िशंस के लिए जो इतना स्ट्रगल करते हैं उनके लिए कुछ ऐसे बजट्स एनरोल होने चाहिए ताकि कम से कम हम स्पोर्ट्स के साथ साथ म्यूज़िक को भी एज नेशनल एक गेम समझ लें या एक ज़िम्मेदारी समझ लें, हमें उसको करने की ज़रूरत है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी कंटेंटेड, वेरी थैंक्स टू एवरीबडी। मैं नाम लूँगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, मगर पूरे पाकिस्तान में हमने जस्टिस किया सारे अवार्ड्स, और ये पूरे पाकिस्तान में से हमने हीरे सितारे निकाल निकाल के इनको अवार्ड्स मिले हैं। और आज हमारा इस सफ़र का ख़ात्मा होता है, बट पिक्चर अभी बाकी है जिसे कहते हैं। अभी हम इंशाल्लाह वापस नेक्स्ट ईयर आएंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और उम्मीद है कि हमें और सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। हम जितने लोग मल्टीप्लाई हुए हैं उससे और मज़ीद लोग मल्टीप्लाई होंगे। और शान पाकिस्तान सिर्फ सेपमा ही नहीं, शान पाकिस्तान भी हर तरह हर तरीके से कल्चर को, आर्ट को, फैशन को, म्यूज़िक को प्रमोट करता है, और हम अपने काम में लगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज़ द लास्ट मोमेंटम कि दिस इज़ ऑल अबाउट शान पाकिस्तान, एंड दिस इज़ द फ्लैग जो हम सिर्फ लहराना नहीं जानते, हमें उसके लिए कुछ करना है। वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू प्रूव आवर सेल्फ, एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इन शान पाकिस्तान विल प्रूव टू ब्रिंग शान ऑफ पाकिस्तान ऑन लाइमलाइट, एंड हमारे पास कमी नहीं है। एंड दिस इज़ शान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।